Hello student, today we start second new chapter, change in profit sharing ratio. I think it is very important chapter for partnership. Because of this chapter, some basic concept like is revaluation of assets and liabilities, distribution of reserves is used in next chapter like as एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, और आगे वाले चैप्टर्स का जो वेटेज है इन 12th बोर्ड वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी चैप्टर से बनेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर लें कि पार्टनर्स जब चाहें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर सकते हैं। बस ओनली जो कंडीशन है इसमें वो ये है कि ऑल पार्टनर आर एग्रीड फॉर द सेम, सारे पार्टनर इसके लिए एग्री हो जाएं कि उनका PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उनका ओल्ड एग्रीमेंट जो है वो कम्स टू एन एंड हो जाएगा, एंड जो नया एग्रीमेंट है फॉर न्यू PSR वो एनफोर्स हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और चेंज इन एग्रीमेंट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो what is the reconstitution of partnership? Partnership is the result of agreement, and any change in existing agreement brings to an end the existing agreement and new agreement comes into an force. It amounts to reconstitution of firm. There are so many circumstances for reconstitution of the firm. First of all, change in profit sharing ratio among the partners, admission of new partner, retirement of an existing partner, death of a partner, or amalgamation of two partnership firm. Now today's our topic is change in profit sharing ratio among the existing partner. For this change देयर आर सम एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट होंगे उसमें। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड वन इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड वन इज अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम ये देखें कि what is sacrificing ratio? The ratio in which one or more of existing partner surrender some of their old share in favor of one or more of the other partner is called sacrificing ratio. The formula: sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. Similarly, gaining ratio, the ratio in which one or more partner gain some portion of their partner's share of profit is called gaining ratio. The formula is gaining ratio is equals to new ratio minus old ratio. Now after the formula of sacrificing ratio and gaining ratio, here is the question. Question is on your screen. According to this question, old ratio of A, B and C is 3:2:1, and they are decided. The change in their profit sharing ratio is 2:2:1. Now we calculate sacrifice or gain. First of all,
OA. That is the formula for sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. The old ratio is 3/6 minus 2/5. The LCM is 30. 15 minus 12 equals to 3/30. Then we can say A sacrificed 3/30. Now comes to B. The old ratio of B is 2/6 minus 2/5 new ratio equals to LCM is 30. 10 minus 12 equals to minus 2/3. This minus shows B is the gainer. Now comes to C. 1/6 minus 1/5. This is old ratio, this is new ratio, and LCM is also 30. 5 minus 6 equals to minus 1/30 equals to gaining ratio. So by this calculation we can say A is sacrificed and B and C are gained. So by this calculation I suppose that is very much understand how to calculate sacrificing and ratio and gaining ratio in the condition of change in PSR.